Good evening, everybody. Beautiful people who have collected here. I'm Dr. Meera Kulkarni, and I work with Institute of Management. And besides that, I'm also a retirement coach and a positive and optimistic coach. And I do a lot of other work. So I basically work in two groups of people. One group of people are the youngsters, the students who come to me for their MBA program, very young, full of life, very loving, caring, and wonderful people to know. And another set of people as a retirement coach I work with are the elderly people. And many times I have seen that there is a disdain, मतलब एक दूसरे ये जो यंग लोग हैं इनको ये एल्डरली लोगों के बारे में ना समझ है या गुस्सा है या their communication has broken down. और ऐसा ही एल्डरली लोगों को भी लगता है. तो आज मैं आपके साथ हार्मोनियस लिविंग के बारे में बात कर रही हूँ. हार्मोनियस लिविंग फॉर दिस for generation where we are going to try and clear this generation gap. So इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जब हम कहते हैं क्या प्रॉब्लम है तो लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि जेनरेशन गैप है, वो हमको समझ नहीं पा रहे. तो हम इस जेनरेशन गैप को समझिएगा, हम उसको एक बीमारी के तौर से यूज कर रहे हैं, एक इलनेस की तरह से वी आर कोटिंग जेनरेशन गैप. बट दिस जेनरेशन गैप इज नीडंट बी सो. It is an opportunity to respect, know, and move ahead with another set of people and to have a very beautiful, vibrant, and harmonious relationships in our lives. So, the flow of my talk would be to understand why ऐसा क्यों होता है कि हम ये generation gap में हम लोग जुट जाते हैं, फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड मेथड्स टू ओवरकम दिस जेनरेशन गैप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझना है कि ये जेनरेशन गैप है क्या चीज. तो बहुत तरह से हम भेदभाव करते हैं. तो कभी कभी हम जेंडर से भेदभाव करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन से भेदभाव करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीकों से हम भेदभाव करते हैं. जेनरेशन गैप में हम भेदभाव सिर्फ एज से करते हैं. सो इट इज अ वे वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग. हम भेदभाव कर रहे हैं लोगों में बेस्ड ऑन एज. तो या तो कोई उम्र में छोटा है, या तो कोई उम्र में बड़ा है, या तो कोई मिड एज का है. तो द ओनली वे ऑफ discrimination that is happening is through age. Now, when I see my young students, many of them tell me that the most effective, positive, and very loving person in our life is our grandparent. नाना, नानी, दादा, दादी, हमारी आंटी, बुआ, बहुत मजा आता है उनके साथ. और ऐसे ही मैं देखती हूँ कि एल्डरली बोलते हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हमें बहुत मजा आता है. और पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं हम तो दोनों साइड में हमें मजा आता है, हमारे बच्चों के साथ भी मजा आता है और हमें अपने एल्डर्स के साथ भी मजा आता है. पर फिर भी ये गैप है. सो दिस इज अ गैप विच इज वेरी प्रेजेंट इन आवर रिलेशनशिप्स, एंड वी नीड टू सी हाउ डज इट मैनिफेस्ट. सो जो एक एज ग्रुप है वो अपने आप को, जो भी एज ग्रुप है वो अपने आप को अलग और सुपीरियर मानता है. तो अगर बच्चे हैं तो वो अपने आप को अलग और दूसरे एज ग्रुप से सुपीरियर मान रहे हैं, और उसी तरह जो उनसे बड़े हैं वो अपने आप को भी डिफरेंट एंड सुपीरियर महसूस कर रहे हैं. और वैसे ही एल्डरली लोग अपने आप को डिफरेंट एंड सुपीरियर महसूस कर रहे हैं. तो इसकी वजह से there is no common platform to meet people. So the whole idea is to let us together explore whether we can all come together on the same platform to see how this goes. So एक सामाजिक
व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं एक सोशल फैब्रिक है, और इस सोशल फैब्रिक में सबका सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप होने से all of us will be happy and we will live harmonious. Finally, if I'm asking you a question, अपनी जिंदगी से आप क्या चाहते हो? What is it that we want from our lives? So I think, like me, most of you would say we would love to be happy and we would like to be harmoniously living with all the elements around me. Right? So this is my effort through this talk on generation gap to get us all together to understand each other. So एक होता है नाखुशी या अप्रसन्नता, that is what we call as unhappiness, rejection. जब हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उन्हें हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अकेलेपन में बहुत ही ज्यादा लोनली, आइसोलेटेड और शायद डिप्रेशन भी आता है। एट द एंड ऑफ इट वन कैन फील वेरी वेरी डिप्रेस्ड इफ other people are not interested in us. Us, when I say us, means a group. So children, say those in the 20s are also feeling like that, and so are the elders and so are the parents. So let us now try to now navigate through this and see how can we make a very harmonious relationship. तो अगर घर में खाना पका, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, घर में खाना पका तो पहले कौन खाएगा? आपके घर में खाना पका तो पहले कौन खाएगा? जिस व्यक्ति ने पैसे कमाकर चीजें लाए खाना बनाने के लिए, वो पहले खाएगा, या जो इंसान ने खाना पकाया वो पहले खाएगा, या बड़े खाएंगे और उनके साथ बच्चे खाएंगे? इसका मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूं, आप ही सोचेगा किसने पहले खाना खाना है। सो हु गेट्स अफेक्टेड इफ रिलेशनशिप्स आर नॉट मेंटेन्ड? इट इज द एंटायर, it is first of all, it is between two people, then it goes into family, then it goes larger into society, and then it goes into neighborhoods and our nation. So there is disharmony. So what is the attempt you and me can take to make harmonious living? This is what we will look at now. So first of all, we need to have an understanding कि मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ही सही है क्या? Can I understand like the way I have a viewpoint, so do all others in various capacities have their own viewpoints. So do I have to emphasize and force my viewpoints? है ना? तो हम क्या बोलते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, जो मैं सोच रही हूं वही सही है, एंड वी आर intolerant towards others' point of view. This is very very interesting. क्योंकि क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम अपने व्यू पॉइंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरों के व्यू पॉइंट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहला चीज हम कर रहे हैं इसमें कि हम एक दूसरे में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं. तो हम ये नहीं कह रहे कि तू और मैं सेम है, हम ये कह रहे हैं कि तू और मैं डिफरेंट है. देखो बहुत अच्छी एक बात एक पर्सन ने मुझे बताया था यंग जनरेशन के बारे में. हमारी तो भाई ये अकड़ है, संभालो. हाँ, सो मेनी पीपल फील द यूथ हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू. But my own experience with children for the last 25 years tells me that they are gifted. So let me look at the young people today. You know, the young people, let me look at their strengths. Let me look at this entire generation of young. So first of all, I see that this young generation
is extremely focused towards technology. They are very good. They have great prowess with technology. My second compliment to this generation is that they are fast in gathering information and executing information. Thirdly, I see that this generation spends a lot of time in the current moment. They are enjoying their present moment to the fullest. Thirdly, I see that they do not interfere. In fact, they are one of the generations that I find that are absolutely non-judgmental. So, इनके कोई friends अगर they have chosen a different sexuality, or if they have chosen a different opinion, or if they have some very different interests or views on life, this complete generation is very accepting of this, which our generation and elderly generation may not be so accepting of differences. This is the beauty of this generation of youth that we have today, the one of the largest dividend in our population. Then I also see that this is a generation which is quite impatient. It wants quick results. बिल्कुल भी सबूरी नहीं है, थोड़ा रुकना है, 2 साल 3 साल. They feel life is too short. So they want everything in the now, this moment. And then I also see that this generation stands a little disconnected with whatever is happening around them if they choose to be disconnected. That means what is happening in the neighbor's house, that means what is happening in their immediate society, family. They're quite happy. वो अपने आप से ही बहुत अच्छे से लगाव है खुद से. खुद में इतने indulge है कि sometimes they can get a little isolated by what is happening around them. This is about this young generation. And then let me look at the older generation. I look at these people extremely invested in relationships. तो जो हमारे संबंध हैं इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया हुआ है इस जनरेशन ने. लोगों का अपने व्यूज को भी एक बार वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे कोई हर्ट ना हो जाए. अगर हम अपना व्यूज बताएंगे तो शायद कोई हर्ट ना हो जाए. ये जनरेशन के पास बहुत पेशेंस है. This generation has learned to save because they have seen many rainy days. And this is a generation जो सोसाइटी के रिचुअल्स को बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, अहमियत देता है. सो दे डू नॉट दे कन्फॉर्म, दे वर्क विद इन बाउंड्रीज एंड दे लिव अ लाइफ which has a lot of pressure of लोग क्या कहेंगे. This is the way this generation lives. अभी अगर मैं देखती हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए और सोशल प्रेशर से उभरने के लिए, उसके ऊपर आने के लिए इस जनरेशन को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो आजकल के यंगस्टर्स कर रहे हैं. अगर मैं इन दोनों जनरेशन्स का कॉमनैलिटी देखती हूँ कि दोनों जनरेशन्स में क्या चीज कॉमन है, तो आई विल डेफिनेटली से दैट अक्रॉस बोथ द जनरेशन्स आई सी द ब्यूटी ऑफ लव, I see the beauty of care. I see the beauty of good heart. Both these generations are blessed with a very good heart, a very loving, compassionate heart. वो लोगों के लिए, दूसरों के लिए सोचते हैं. Then I also see this generation in a very different way. One way I see that both are very materialistic. The younger generation buys brands. And the older generation cannot part with their old things, है ना. So ये जो चीजें हैं, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम बात कर सकते हैं इन दोनों जनरेशन के पास. अब दोनों जनरेशन भी सिंपल लिविंग की ओर आ रहे हैं. सो इन द यंग पीपल हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट चल रहा है मिनिमलिस्टिक लिविंग, यानी कम से कम चीजों में हम रह सकते हैं या नहीं. और हम ओल्डर जनरेशन में तो ये सिंप्लिसिटी देख ही रहे हैं.
तो अगर मैं देखूं कि ये अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म लूं, तो इस कॉमन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो हम दोनों को बहुत हार्मोनियसली एक साथ ला सकती है। तो दोनों जेनरेशन के ऊपर अलग अलग प्रभाव हुए हैं, इसको भी हमने समझना है। जो ओल्डर जेनरेशन है, आप समझिएगा कि उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जीवन में अपने बहुत ज्यादा कमियां देखी हैं। दे हैव सीन स्कैरसिटी। दिस इज अ जनरेशन वेयर राशन के लाइंस लगे, जब चीजें इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, जब कम चीजों में ज्यादा करने का उत्साह रहता था, बिकॉज रिसोर्सेज वेर लेस। एंड इफ आई लुक एट द यंग जनरेशन, आई सी दैट दे आर burdened by over choice। जो भी चीज आप देखो, हर एक ब्रांड में इतने सब अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, फीचर्स। तो एक साइड में ये एलपीजी के बच्चे हैं जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में पैदा हुए हैं, जो इनको हम कहते हैं मिलेनियल जनरेशन। ये जो जनरेशन है, ये बहुत ज्यादा चीजों से कनेक्टेड है। तो इनके लाइफ को जब हम फुल करना चाहते हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस और इन्फ्लुएंसेस हैं। और जो ओल्डर जनरेशन है, जो एक बहुत ही, देखिए, वर्ल्ड वॉर 2, रेशनिंग, ये सब देखे हुए लोग हैं। तो इनके लाइफ में स्कैरसिटी है। अब हम ये दोनों जनरेशन को एबंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एबंडेंस किस चीज का है? एबंडेंस है हमारे में समझ की एबंडेंस है। क्या हम दोनों सही समझ में है? समझ का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग ईच अदर करेक्टली? देयर इज अबंडेंस ऑफ लव एंड केयर। एंड आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहां एक सरिता भाभी करके है, और her best friends are all the children of our society. So where is the generation gap? And I have also seen my own students helping people, helping elderly people, helping any person, not definitely or definitely to be part of their age group. They just come across and help people. So both these need to understand and have to come to see that is this common platform that we have. How do we now connect? So my next point is, अगर मुझे ये ब्रिज बनाना है, मुझे एक सेतु बनाना है to connect the generations, what should I do? So let us now together try and understand this. तो पहले मैं सबसे ज्यादा अहमियत दूंगी, तो वो है हार्मोनियस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रिस्पेक्टफुल। वी एल्डर्स हैव नो राइट टू से यू आर यंग। तुमने क्या देखा है, तुमको क्या एक्सपीरियंस है, इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से हम कॉमनैलिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो rather than put your superiority based on your experience, please try and understand the generation. To understand this generation, we have to learn to respect. We have to learn to respect each other. So elders have to learn to respect children. Children have their own views, children are leading their own lives, और अपनी अपनी सोच है। तो हम, how can we just be dismissive of what they think? How can we do that? We have to appreciate their way of thinking, their why वो ऐसे है, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है जिसकी वजह से आज वो लोग इस तरह के व्यूज पे आए हैं। And there is nothing right and wrong in the world anyways. We don't have black and white, we have grays to deal with. So if we are respectful towards children, and children also learn to be respectful to to adults and elderly, instead of being dismissive of them, saying that abhi shuru ho gaya unka, क्या
प्रीचिंग मोड पे चले जाते हैं, ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, फिर बोल देते हैं हमारे जमाने में. सो इंस्टेड ऑफ looking at each other as different, if we learn to firstly respect each other, then we will be able to conquer so much more. Secondly is we need to communicate effectively. तो जब हम संवाद करते हैं एक दूसरे से, तो हम ये अप्रोप्रिएट संवाद करते हैं क्या? If I speak respectfully, if I speak to listen, if I speak to understand, then my communication, then my direction of communication goes correct. But if I learn to communicate, to differentiate, to divide, to show my superiority, then I will not be able to communicate. So again, I'm repeating, right communication is extremely important to move forward in building this bridge. So I have taken up respect for each other. Second I have taken up is learn to communicate appropriately with each other. Third is have compassion. Compassion and love, मतलब करुणा और प्रेम, इन दोनों के साथ हमने रिलेशनशिप्स बनाने. तो ये कैसे आएगा? अगर मैं हर चीज को अपने ही नजरिए से देखती हूं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगी. अगर सामने वाला अपने आप विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस है, ईच ऑफ अस comes out from the circumstances that we have grown in. So if अगर हर जन अपने अपने circumstances का victim है, तो उसके लिए उसका एक्सपीरियंस रियल है. किसी को ज्यादा दुख होता है, कोई बहुत देर तक ग्रीफ करता है, कोई पिछले चीजों को लेट गो ही नहीं कर पाता है. ये उसका मेकअप है. इफ आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रिज, I need to be compassionate. I need to come up with love. How else can I connect with you if I do not love you? So I need to connect with love. And this is very simple. Be genuine. उसको understand करो. वो क्यों ऐसा सोचता है, उसके क्या circumstances है. बहुत अच्छा इंग्लिश में एक शब्द है, empathy. So if I can show empathy towards you, I can connect with you. My idea of connection with you is so that I build a relationship with you. I do not divide. I join with you. Okay? So this was my third point. Now my fourth point is search for commonality. एक दूसरे में, हम लोग सारे तो फिर इंसान ही हैं, तो ये सबसे बड़ा commonality है हमारे में. So we're all people and we're all connected by a divine force that made us all human beings. So this is the first good starting point to search for commonality. And the next point, which is very interesting, is please understand that we are interdependent with each other. हमको वो भी चाहिए और हम भी चाहिए. तो ये कैसे होगा? तो इनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, एंड क्विक थिंकिंग है, और हम काफी बोल्ड है. हम अपने ओपिनियंस दे सकते हैं. हमको अच्छा लगा, नहीं लगा, हम बहुत रियल रह सकते हैं. The young are very real in their living. So if I connect these two and then I use this synergy to move on, then it means that interdependency will help in moving forward for the entire relationship movement. संबंध, जो संबंध बनने हैं वो आगे बढ़ेंगे. तो हमें अपने आचरण, दैट मीन्स हमें अपने कंडक्ट की ओर ध्यान देना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड दिस ब्रिज दैट विल कनेक्ट दिस डिवाइड. सो लेट मी मूव फॉरवर्ड टू सी who are all the stakeholders when I have a good and harmonious relation. एक तो मैं और आप, अगर हमारे में डिवाइड है तो हम लोग दोनों साथ आ गए, तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी. तो हम हार्मोनी में है, तो हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम खुश है, हम हैप्पी है, हम हार्मोनियस है. सेकेंडली,
Like this, when I have this in me, then I can extend it much more than myself. I can take it out to society. I can take it out for the country. I can take it out for humanity. I can take it out for biodiversity, plants, animals, birds, all my natural resources. Because I am now geared, I'm now tuned for harmony, right? So much more productivity can come out of me if I am now harmonious. So if I value, अगर मैं अपने जिंदगी में हैप्पीनेस और हार्मनी को वैल्यू दे रही हूं, तो मैं जानती हूं कि आत्मा और सोल एजलेस है. तो आपका सोल, अगर आप 25 साल के हैं और मेरा सोल, आई एम 56 and there is a person 86 and someone 105, our souls are the same. So if I come in this platform to appreciate and understand that, then I learn to value happiness and harmony. So I will be positively appreciating differences, and I will be able to work on strengths of each of these groups. Instead of looking them as different for me, I will look at them मेरे जैसा. ये मेरे से अलग नहीं है, ये मेरे जैसा है, ये मेरा अपना है. अगर मैं खुद की हूं तो ये भी मेरा ही है. तो अगर ये रिलेशनशिप में आए तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ओपिनियंस डिफरेंशिएट नहीं होंगे, आपके मत राय अलग अलग नहीं होगी, आप अलग अलग सोच सकते हैं, बट आप उसको भी रिस्पेक्टफुली लेंगे. Because we have now created a common goal. We have created a goal for harmony and happiness for me as well as for you. And this is how we will do it. So, in order to enhance our own individual productivity, bad relationships come in our productivity. To increase our productivity, we need to have good relationships. We should feel happy with our relationships. Whoever we are dealing with, whether they are younger, older, whoever, we should feel happy. When we are happy, we are the most productive. Secondly, it will improve our own quality of life. Because now I have so much more to gain from so many more. मैंने अपने आप को एक कंपार्टमेंट में डाला था, मैंने अपने आप को एक एज के जकड़ में, एक केज में डाला था, अब मैं उस केज में से फ्री हो गई. So many more, so much more is available to me. And thirdly, we will move forward towards a undivided society. So one of this विभाजन का कारण है अपनी सोसाइटी में age. So today, let me quickly recap what we have done. Beautiful people who have joined me just now and have been seeing, I hope it will have some bearing on our relationships in our lives. And especially with, this bimari of, we just label it. We call it generation gap. We don't need to label it. Both sides have wonderful people at the ends. Okay? So let us connect. Let us join. Let us synthesize. Let us use this energy for a symbiotic growth for you and me and all the people who have joined in. Please reflect in the next 5 minutes as to what you can take away from this sharing for yourself. If there is some relationship, ऐसा कोई भी relationship है जो आपके लाइफ में एज डिफाइंड है और थोड़ी किरकिर चल रही है, उसमें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, प्लीज revisit it, re-look at it from this beautiful bridge that I have given you today. Focus on your strengths, both the groups, and come together for development, for productivity. Both of us have strengths. We just have to combine it. We just have to synergize it and use it for the betterment of mankind. So I look forward to, any interesting comments at your end, or your special feedbacks, or your special sharing. And I have definitely enjoyed this. Thank you, Nanna Gyan Group,
for giving me this wonderful opportunity, and especially Shailaja, who has been actually probing me to come on this session. Thank you once again, and all my beautiful audience who have been with me in this journey, and I'm sure are going to take back something from this sharing. Thank you so much. Namaskar. I have now finished